Hi everyone, hello to all of you. A very good evening. Welcome to CrackGradeB. Please let me know if you can hear me and see me properly. I think we are good to go. Now the session is showing live, but I need your confirmation, students. Audible, visible. Hi everyone. I'm Niharika John Mehra and I have been teaching English for more than 10 years now, जो कि competitive exam के लिए है. So I won't waste a lot of time. See guys, we have our exam so close कि जितनी और practice हम कर सकें, speed practice, that's what we should be doing, है ना? तो हम speed की भी practice करेंगे, साथ साथ we will understand. For example, अगर fill-ups हैं तो सारे words we will do. When I will be explaining, I'll make you do those words ताकि revision हो जाए. New words अगर हो तो आप सीख लो. If there is a grammar rule error detection में, I would take you through that while explaining. This is the way you should practice in your own time as well. Okay, so thank you so much. Good evening, and quickly like and share कर दीजिए. बस in a minute we are going to start. And हम set wise करेंगे. So first set 10 questions we will do in first go with timer. And उसके बाद में I'll explain. उसके बाद हम next वाला set करेंगे. Okay. The time of the session was 8:30. We were facing some technical issues. इसके पहले भी I went live for like 10-30 seconds and then पता नहीं कुछ हो गया था. So 8:30 is what is my timing. But I have classes on our courses as well. तो वो आपको देखना पड़ेगा platform पे एक बार. Okay? चलो. So without wasting any time, आपको आंसर यहाँ करते जाना है. Explanation first set of questions over होने के बाद होगा. तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस पहले बैक टू बैक करेंगे. दिस इज द फर्स्ट वन. हियर यू हैव फिलअप्स, डबल फिलर का सिंपल से क्वेश्चंस है. टाइमर के साथ में आप शुरू करेंगे. I'll answer all your questions once we are done with the questions. I don't want to disturb anyone as of now, क्योंकि हम ये मॉक टेस्ट के वे में कर रहे हैं. Explanation later on. Next one. You can simply message A, B, C, D.
कंटिन्यू डूइंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट सेट ओवर होने में 5 क्वेश्चंस और बाकी हैं। रीड द इंस्ट्रक्शन। Explanation will be given later on. इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वी विल गो इन द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन आफ्टर दिस क्वेश्चन, और फिर हम आगे के और क्वेश्चंस करेंगे। तो कीप अ स्कोर, ओके। अपने मन में रखो, अभी मत बताओ मुझे। वंस वी विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, वंस वी आर डन, देन आप बताएंगे, ठीक है। सो या, हियर वी हैव अंडरस्टैंड, ओके। आई विल गो इन द रिवर्स मैनर। फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन। जब तक आप लाइक और शेयर कर दो जिन्होंने नहीं करा है। द कंपनी इंटेंड्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, प्लूरल है, तो दैट के बाद में जो भी वर्ब आएगा वो भी आप प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाओगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पी के, एक है पी डबल ई के, एक है पी ई ए के, और एक है पी आई क्यू यू ई। फर्स्ट इनके डिफरेंस को आपको पता होना चाहिए। तो पी ई ए के, पीक जो है वो माउंटेन का जो टॉप वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं, ओके। तो वो नहीं होगा।
ये वाला पीक होता है झांकना। तो हम यहाँ पे दोनों की ही बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी से PIQUE वाला पीक विच इज अ वर्ब, इट मीन्स, बाय द वे एज अ नाउन भी यूज होता है ये। तो एज अ वर्ब वाला जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज को और प्रोवोक करना, एनकरेज करना, उसमें एक स्टेयर लेकर आना, है ना। स्टिमुलेट बोल सकते हो। इसका दूसरा मीनिंग भी होता है विच इज अ नेगेटिव वर्ड, दैट मीन्स टू इरिटेट समवन। ही पीक्ड मी टुडे अ लॉट, मतलब कि उसने मुझे बहुत ज्यादा सताया, परेशान करा। एनीवेज यहाँ पर जा अपॉर्चुनिटीज दैट पीक यानी ये एक प्रकार से उजागर करती हैं स्टूडेंट्स क्यूरोसिटी। प्लूरल है, एक इकलौता स्टूडेंट नहीं, सभी की। तो प्लूरल के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाना था। दैट वाज योर आंसर। ओके, एग्जैक्टली। तो बी आपका आंसर था। If he considered you to be bright, adjective, capable, and making contribution to his proposed project. Now, very interesting question, हाँ, समझना इसको। If he considered you are bright, he capable. He capable तो वैसे ही नहीं होगा, अपने आप में ऑप्शन A is wrong. To be bright, capable, and had been contributed. That doesn't make sense. Would have been bright. हो सकता था past में, meaning नहीं निकलेगा. Okay? Now what we are saying is, if he considered you to be a bright, capable, and making contribution. So making यहाँ पर क्यों आया? You should know present participles बहुत बार adjectives के समान काम करते हैं। तो एक क्वालिटी होना चाहिए ब्राइट, एक क्वालिटी होना चाहिए केपेबल, एंड अनदर क्वालिटी मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सम प्लेसेस, सम थिंग्स। इस वजह से ये भी एडजेक्टिव पैरालिज्म में ही आगे बढ़ रहा है, एंड यहाँ पे 20 का आंसर था। ओके, इट्स नॉट लाइक इफ ही कंसीडर्ड यू मेड कॉन्ट्रीब्यूशन। मेड यहाँ पे गलत है ना। वी वॉन्ट समथिंग जो ये यू को डिस्क्राइब कर रहा है। पहला वर्ड ब्राइट था, दूसरा वर्ड केपेबल था, प्योर एडजेक्टिव्स। After and you are getting a present participle verb का ing form acting as adjectives. In one small excavation in Cyprus, archaeologists recently uncovered, बहुत बहुत simple, uncovered verb है, we need adverb to explain that, and archaeologists, that's a subject here in this sentence, so that's why we don't require any apostrophe or so. तो यहाँ पे आंसर सी, this was very simple. I'm not going to explain further. One of the problems of the tourist industry is that of fixing what people want to see into the time they have free to see in. Into the time, fixing what? Whenever we have a wordy option where unnecessary words, conjunctions and all are given, हम वो नहीं choose करते हैं। हमारा जो भी correction होगा that should be crisp and to the point. Okay? Another thing that you have to learn is, if you don't know, अगर आप मेरे क्लास को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, the method is called POD. Okay, it is POD, point of difference. Now I am not going to go through all the words, all the options completely. मैं वो देखूंगी जहाँ पे difference आ रहा है. So one of the problems is what? Is fixing. Fixing what? Whatever people want to see when, in the time, what kind of time they have set free. So they have set free, time word को explain कर रहा है। इसके बाद का object है fixing. Okay, so that's the reason कि हम यहाँ पे B वाला आंसर चूज कर रहे हैं। Even after explanation, if you have doubt, there is anything you want to ask, आप comment कर सकते हैं। Again, point of difference. In India, the performance of selectors comes. सारा कम्स है ना, हर जगह कम्स है ऑप्शन में, तो मैं ये वर्ड पर ध्यान ही नहीं दूंगी। कम्स अंडर, कम्स बीनीथ, कम्स बिलो, कम्स बीनीथ, कम्स अंडर, बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकली टॉकिंग अबाउट पोजिशन ऑफ वन थिंग जो कि एकदम किसी के नीचे है। सो परफॉर्मेंस किस क्षेत्र में आती है, किस पैरामीटर के अंदर आती है, दैट्स द सेंस हियर। So performance comes under as much scrutiny as that of players. तो as एक आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, तो as के साथ में much और much के साथ में scrutiny आएगा। below और beneath आ ही नहीं सकते थे। comes under much criticism. criticism का context यहाँ पर नहीं होता था। grammatically फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, but meaning wise of course we get no sense. That's why आप no correction required नहीं करोगे।
let's go through the words. Okay, so I'm happy you people did well here in fill-ups, even in the other part. The log jam, the CJ mentions, is an inescapable. inescapable मतलब escape नहीं कर सकने वाला. So reality is something you have to face. So inescapable, and the government owes an explanation if there is any for its tardiness. Now, some other words that are here, and I just want to give a quick go through कि आपको revise हो जाए. Avertible is something that could be turned away. Avert कर सके हम उसे, है ना. Escapable is escape कर सकने वाला. बाकी इजी वर्ड्स है. Promptness is एकदम से जो होता है, you don't take a lot of time into it. Tardiness is being late. So we are talking about reality जो कि आप escape नहीं कर सकते, and the government owes an explanation अगर कुछ भी lack of timing या फिर delay होता है, tardiness उसको बता रहा है. He is dash that his own trading fame does not overshadow the spot. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, there is something negative. That's why आगे की बात भी negative में. After but we are seeing there is a contrast. But is dash about his passion. So we want two words. First word will be negative. हम बोल रहे हैं उसके बावजूद whatever negative is happening, there is something about his passion and वो कैसा है. Okay. So हम जो यहाँ पे देखते हैं, he is anxious. Could I have said worried? बिल्कुल बोल सकते थे. Anxious, worried, nervous एक ही वर्ड है. Curious and excited positive words है, तो वो नहीं यहाँ पर आएंगे. Okay? So he is anxious about his own trading fame, कि उसका खुद का फेम ओवरशैडो नहीं कर ले, but is unabashed about his passion. लेकिन अगर उसके पैशन की बात आती है, so he is not one of those जो कि पैशन को लेके कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेगा. ओके. टेरिफिक ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको बताना पड़े. बायलैटरल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वर्ड जो कि बहुत टफ है. लेट मी नो इफ यू वांट टू नो समथिंग एल्स. ओके. देन behaving in a calm and serious way. So whenever you have and, आगे पीछे सेम टोन के वर्ड्स होते हैं. Behaving in a serious way, तो कैसा होगा? स्टेडी हो सकता है ना. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. स्टेडी है, स्टेडी, काम, all these again words they tell you about something जो कि सेम टोन में जो सीरियस वर्ड है उसके साथ जा रहे हैं. सिली ऑफ कोर्स नहीं आना था यहाँ पे, एनीवेज. और कूल एंड सीरियस, अगर कूल है तो सीरियस कैसे, और सीरियस है तो कूल कैसे, ये तो आप ऑपोजिट वर्ड है. तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो है काम. फ्लैम्बॉयंट इज वेयर समथिंग इज वेरी वाइब्रेंट, बहुत एनर्जेटिक है, तो वो सीरियस के साथ जाने वाला वर्ड नहीं है, एंड से हमें जोड़ना है वर्ड. तो बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू. यही है जो रिस्पेक्ट यहाँ पर लेकर आएगा. बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे रिस्पेक्ट को लेकर आएगा, है ना. एस्टाउंडिंग, ट्रिकी, एंग्री, नो, नथिंग मेक्स एनी सेंस. देन मैनेजर्स कैन यूज डैश टू बाईपास एनालिसिस. एनालिसिस को बाईपास करना है ना. तो एनालिसिस इन डेप्थ ज़्यादा नहीं जाना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा. उनकी मेमोरी, मनी, मैनेजर्स की खुद के मनी यूज कर लें, सोर्सेज यूज कर लें. नो. इंट्यूशन, सिक्स सेंस, मैनेजर्स कैन यूज दैट ताकि इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करना पड़े, एंड क्विकली एक प्लॉजिबल, एक पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट हो सके. ओके. तो पॉसिबल भी आ सकता था सेकेंड में, पर ये सोर्सेज फर्स्ट ब्लैंक पे नहीं आता था. And after this question we are going to continue with more questions. Biological clocks are of great value to animals. Adaptive value तो है, immense value भी हो सकती है, great भी है, ultimate is सबसे ऊपर, we cannot say that. High value भी बोल सकते हैं, पर second blank में क्या? Since it regulates functions जो कि nervous and physiological हैं, सो फंक्शंस को रेगुलेट करा जाता है, एक प्रॉपर तरीके में, एक फ्रेमवर्क में डाला जाना. दैट्स व्हाई ओनली रेगुलेट्स वर्ड कैन कम सेकंड ब्लैंक में, एंड दैट्स व्हाई आपका आंसर बी था.
तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो जो बाद में ज्वाइन करे हैं स्टूडेंट्स, लेट मी क्विकली टेल यू, हम a number of questions सेट के रूप में कर रहे हैं, बैक टू बैक विद टाइमर, एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, देखो पढ़ो क्या करना है। टाइमर इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। Mansi, see, we have seen usually it's one long passage in prelims, but anytime you can get a surprise. Okay? अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। Why you are scared of passages? They are easy. आंसर सामने होता है पैसेज में। Have to answer in the given time, okay? Yeah, that's okay. I mean, we can, it's good to know what should be the word, but even if not, at least answer पक्का होना चाहिए। There are 15 questions in this set. Focus. Read the instruction properly. That's okay. You can keep your score. Last में मुझे बताना।
not getting you this year, but I hope you are understanding the question correctly. I just need the answer A, B, C, D, E, whatever you think is the answer. Now my favorite. This is para jumble. Instruction नहीं लिखे हैं. Assuming that you know what is to be done, but फिर भी quickly बताती हूँ. There are 6 sentences. इनको arrange करना है एक paragraph में. You won't get any options because in exam also आपको पूरे करने होंगे, पूरा arrangement करना होगा. Okay, start doing it. I'll give you 3 to 4 minutes to do this one. इसके ऊपर almost 5 questions you will get in exam if this topic comes. You have to arrange the sentences into a coherent paragraph. It's a para jumble. So I want complete answer over here in the comment. Take time, think properly.
Understand the clues. Come on, people. Maybe a few seconds more. I want complete answer, complete arrangement. In exam, you can take 3.5 minutes to solve complete question of para jumble, where you will be having at least 5 questions. So वो doable होता है ना? Now here the answer is B E A C F D B E A C F D को बीच में C F D वाला भी कोई भी नहीं आया. चलो, let me start with this explanation and then we will go in the reverse manner. The questions we are done with. You can let me know your score as well. Okay. So consider 6 question है तो सबका arrangement का 1 1 1 1. Okay. Let me mark some keywords for you. How do we do it? We have two approaches. One is inverted triangle, जहाँ पर broader information, general information पहले देते हैं. We narrow it down and go into details. Next is, or the other one is where we make some pairs and later on we bring those pairs together to form a complete paragraph. While the reference point for the former is the state, for the latter it's society. Now former and latter इनके meaning होते हैं out of two पहले वाला former, out of two second वाला latter. So we should have been talking about at least two things. If I want to use a sentence, right? Hold karo. India's strategic community comprises two distinct circles with overlap. So, okay, this is introduction of the community and other sentences जो है वो sense नहीं बना रहे to be the first one, है ना? क्योंकि यहाँ पे to further elaborate है. This is a keyword. Out of the two. So I should name two, then only I can say the two. THEIR, their prescriptions too, TOO2. So this is also dependent on something. C says consequently. Now, एक mistake शायद जो आप लोगों ने करी है, we don't take the word finally, thus, consequently as something जो हमेशा last में होगा. It's not like that. It could be second last. It could be third last also. So दूसरी चीजों से pair बनाओ. Okay, now of course B is the first one. It talks about there are two distinct circles, and out of the two, one can be termed mainstream and the other alternate. So these are the names of the circles. And B और E पक्का pair है, और क्योंकि B पहला है, E automatically second हो जाता है. Okay? Now we are still explaining these things. What is mainstream? What is alternate? है ना? Wait. To further elaborate on the external and internal concept. Where are you getting it? C wala padho. Consequently, mainstream strategies have an external
and internal, दो terms introduce C में करी हैं. Now we are further elaborating. The meaning of the word further is you have mentioned it, now you are adding more to it. So there is another pair which is a short pair that is of C and F. Okay, even if you don't know where to put, you should at least have a strong pair which is C and F. Then A says while the reference point for the former and latter. तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन की ही बात अगर करें, we have two things. Then उनका नाम आया mainstream and alternate, and now we are saying former is mainstream, latter is alternate. So BEA, they are gonna come together and they are the first three. Automatically they become the first three because B is the first one, opening sentence. E और A बराबर पीछे पीछे लग जाते, still introduction part is going on. C and F में we get to see some more details. D को कहाँ use करना है? C. Their prescriptions too are understandably poles apart, and thus ये 10 पे ध्यान देना था आपको. The state to which both their commentary is directed has to play balancer and ends up, this is the conclusive tone, ends up being at the receiving end of criticism from both sides. So from the meaning of the sentence, their prescriptions too are, तो अभी आप C और F के बाद ही इसको बोलोगे, because we are raising something like we are brainstorming on how things are working in C and F. तो D को आप आखिरी में ही रखोगे, you cannot put it in between. Automatically आपका आंसर आ जाता है. I hope you are getting this. Let's move on to error detection. उसमें भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन था mark the correct one. Question was choose the part which does not have an error. Please read the instruction properly in exam. Okay. So as the junior most son, okay, so सबसे छोटा, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है. Got a ticket from the local assembly constituency. It is singular, which goes, go नहीं आएगा, simple subject verb agreement error. Tube hole in the second phase of elections. So whenever we talk about हमारे चुनाव के बारे में इंडिया में, we say elections, we don't say election. Okay. On November 3, he will के साथ verb का first form आता है. He will seek blessing, sought आ ही नहीं सकता था. So answer was A, which had no error. You can ask me if there is anything in your mind after I finish explaining that particular question. While talking to PTI, the 18-year-old boy. So we are talking about a specific boy. While के साथ talking, everything is good to go. Boy said that it was his mother. It के साथ वर्क तब लगता है when we are supposing something. Okay. I wish it were a Sunday. Today is Monday, but I wish it were a Sunday. तो वहाँ पे मैं वर्क लगा सकती हूँ because I wish के साथ is a hypothetical not possible thing. इस वजह से, but यहाँ पर तो मैं was लगाऊंगी. Who constantly did what? Motivated. Correct form of verb. Him to become. To के साथ verb का first form आएगा, became नहीं आ सकता. A was the correct one. Okay. Excuse me. Next. According to the agency, during their investigation, we have a noun here, and before noun, if you want to use, you cannot use S. Investigation is theirs, full stop. ऐसा होता तो अलग था, then I can use their with S. यहाँ पर नहीं, तो their आएगा. They found that Sanjay incorporated something. So whenever you use founded, this word, this means laying down foundation. This school was founded by ABC. Okay, तो उसकी foundation किसने रखी थी? बट यहाँ पे किसी चीज के मिलने की बात हो रही है, सो फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड आएगा, फाउंडेड नहीं आएगा. Various entities in UAE as a beneficial owner and also had some interest in. So interest किसी चीज में होता है, and that's why we say interest in. I have interest in teaching English. Okay, so C was your answer here. I hope you people are with me. समझ में आ रहा है सभी को? Every time I am explaining,
I want you to revise that rule in the mind so that एग्जाम में आपकी ग्रामर अभी अभी थोड़ी सी और होन होती रहे. ओके. नेवर गेट स्टक इन नेम. फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, अभी नाम में तो कोई गलती नहीं होगी. Said a V-shaped pattern of recovery in the economy is being seen after being verb third form. Saw is second form. Error. अभी यहाँ पे एरर मिल गया तो बस हल्का सा पढ़ के आगे चले जाओ. यू डोंट हैव टू फाइंड अनदर एरर इन बी. एक्सप्रेस्ड व्हाट. एक्सप्रेस्ड व्हाट का आंसर नाउन होता है. कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, नहीं यूज कर सकते थे. एक्सप्रेस्ड व्हाट, कॉन्फिडेंस, नाउन चाहिए. टू सपोर्ट. टू के बाद में we use ing form in certain cases. I'm not going to discuss that and confuse you right now, but in this case 2 plus v1 infinitive का use आपको करना है and hence A is the answer. Oh yeah, UAE में द आएगा, pardon me, वो मेरी टाइपिंग एरर है. तो इसमें ऑप्शन नहीं था ऑल आर इनकरेक्ट. दैट्स अ टाइपिंग एरर. एब्सोल्युटली राइट. आप जिस भी कंट्री के नाम में यूनाइटेड आता है, यूनियन आता है, रिपब्लिक आता है, किंगडम आता है, ये 4 अगर कुछ भी वर्ड आता है तो आप द लगाते हो. एब्सोल्युटली राइट. तो +1 टू ऑल ऑफ यू जिसने यहाँ पे ऑप्शन नहीं था ऑल आर इनकरेक्ट वाला. लेट्स गो अहेड. दिस वन. So another proper noun, इसमें we won't be doing anything. So Titarati had felt that Muralitharan had made statements. What kind of statements? Now I need a word to explain these statements. क्योंकि ये मेरा main verb तो हो गया यहाँ पर. Statements are the types where they are denying. So I want to use an adjective. And adjective is not there, so I will use present participle as adjective. Amid his support. See, supportive इव वाले words सब adjective होते हैं. So supportive wife, supportive husband, supportive teacher. But we don't have a noun here. We have, after this word, we are having a preposition. So support आएगा. That oversaw. Oversaw is verb second form. Overseen is verb third form. I cannot simply use that third form alone here. एक verb चाहिए है. तो यहाँ पे had overseen होता तो अलग बात थी. But of course we go for the minimum changes. So oversaw आएगा. Okay? Yeah. Swami, I hope I have cleared your doubt. That was a typo error from my side. Okay? Refrain. Keeping yourself away from doing something. So you are supposed to mark the statements where the word is used correctly. Okay. The saying every vote counts is a familiar refrain in politics. Okay. And the third one, the sign on the wall said, please refrain from smoking. Now these are the questions and they are called word usage. Okay. So word usage mein you could be asked which is the right usage. You could also be asked इसमें से right usage कौन सा नहीं है. So as I told you, first meaning of refrain as a verb is stopping yourself from doing something. ये refrain word noun के जैसा भी use होता है. Okay? So कोई भी line होती है जो एक poem में या फिर एक गाने में या फिर एक किसी भी चीज में रिपीट होती है, बार बार आपको सुनने में आती है, तो वो भी रिफ्रेन बुलाते हैं एज अ नाउन. तो दिस इज करेक्ट. सेकेंड इज नॉट, थर्ड इज करेक्ट. ओके. तो प्रोविंसेस रिफ्रेन ऑल पावर्स नॉट डेलीगेटेड, मीनिंग ही नहीं निकल कर आ रहा है यहाँ पे. तो फर्स्ट है द थर्ड वन. ओके. देन पिनिकल. ओके. This was the pinnacle of my happiness, for which I was a little while dashed to earth. Now, pinnacle is the topmost point. वो सबसे ऊपर वाला, zenith. Okay? So yes, third is the sentence. उसने यहाँ पे बिल्कुल बराबर pinnacle use करा है. The pinnacle on the western side contains a low new cone with numerous rifts and vents. तो यहाँ पे भी आप topmost point की बात कर रहे हो. When Sumit got fired and was unable to find another job, he realized that his pinnacle life was at its worst. Pinnacle life, top life, makes no sense. Second nahi ho sakta. You people made a mistake in this one, and see guys,
वर्ड यूजेज में क्या क्या आता है. यू हैव टू चेक ग्रामर, यू हैव टू चेक द स्पेलिंग. जैसे वो पीक थी, PEAK, PEEK, PIQUE. ओके, सो यू चेक द स्पेलिंग and if that is the correct word for the sentence or not. You check the grammar and then you check some phrasal verbs and phrases. तो ये सब क्राइटेरिया में वो वर्ड सही यूज होना चाहिए. ओके, सो बैंक ऑफ क्लाउड्स वाज बिल्डिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट. बैंक इज ऑफ कोर्स बैंक जो कि एक इंस्टीट्यूट वाला बैंक होता है. बैंक इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग एज वेल. तो फर्स्ट वाला बैंक ऑफ क्लाउड्स इज द कलेक्शन, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे. He rose and crossed to the fireplace and began to bang the fire. The hall clock struck 11 times. Bang the fire is a phrase. Bang the fire का मतलब होता है जो अगर आपने फायर प्लेसेस देखी हो बाहर, मे बी ऑन टीवी और एट योर प्लेस इफ इट इज़ वेरी कोल्ड, तो जब हम ना आग को बुझाते हैं, वी डोंट कम्प्लीटली डाउज इट, बट वो उसके ऊपर राख या कुछ ऐसा डाल देते हैं ताकि गर्म रहे लेकिन लपटे उसकी बंद हो जाए. सो दोज फ्लेम्स एंड ऑल, वी वांट टू स्टॉप दैट पार्ट ऑफ इट. तो उसको बैंक द फायर बोलते हैं, बैंकिंग फायर बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई सेकंड वाज आल्सो करेक्ट. He rose through the banks to the top position. Through the banks? No meaning at all. Okay? Evaporate. The flood damage was so bad that they had to evaporate the city. Wow, I would love to see anyone doing that. But city को गायब नहीं कर सकते. Evaporate has to do with something that is vanishing. So the water evaporated in the sunshine? Definitely. गायब हो गया. All her confidence evaporated when she saw the examination paper. Bad thing happened with her. Very sad. But confidence chala gaya, vanish ho gaya. So second and the third one, but not the first one. And left, this was very easy. The first door on the left side, right and left wala, left side. First is good to go. I am willing to left it to the majority. My question to you, यहाँ पे leave होता तो सही होता. I am willing to leave it to the majority. Tell me in the comment now. We had not left any of our belongings behind. छोड़ देना, leave, LEAVE. Form of leave, verb third form left. Make some sense. In the sentence, form is also correct. So first and third आपका आंसर था. So ये explanation थे, but my question, could I have used leave over here in the second sentence? I am willing to leave it to the majority. We did around 26 questions, 25, 26 questions in this whole session. No one is saying anything. Why so? Come on, people. Itna easy word hai. You might be using this word in various contexts, even in your mother tongue. You know, sometimes we use some English words while we are speaking in our mother tongue. So what about this one? Can I say I'm willing to leave it to the majority? Is the problem just of grammar here in the second sentence? See, there is another session scheduled in a few minutes. So, jaldi answer though. Exactly, I could have used. Why were you thinking so much? I could have used it, no? I'm leaving this to you guys to like and share the session. Trusting you guys, leaving in your hands. तो वो चीज यहाँ पर सही होती अगर leave होता तो. Okay, so that's it for this session. I hope to see you guys even in the next sessions where I am here, and we will be doing more mock tests, the similar kind that we did today. तो उसमें हम और सीखेंगे और practice करेंगे. Thank you so much. Take care all of you. Make sure to like, share and subscribe.